Hello and welcome to all new episode of Ranchi Updates presents Technical Shubchintak. आज हम देखने वाले हैं एक प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट और ऑलमोस्ट क्लोज टू फ्लैगशिप एक्सपीरियंस फोन्स को. ये सेगमेंट इज द नेचुरल शिफ्ट. वी ऑल आर विलिंग टू अपग्रेड. हम सब प्रीमियम सेगमेंट्स की तरफ जाने वाले हैं 35, 40, 45 हज़ार रुपए की प्राइस रेंज में. एंड इस प्राइस रेंज में द लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट ऑफरिंग बाय सैमसंग, द सैमसंग गैलेक्सी A73 5G. A huge shout out to Balaji Sales जिन्होंने हमें ये फोन प्रोवाइड किया है इस वीडियो के लिए. अगर आपको भी एक स्मार्टफोन खरीदना है, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने हैं, एंड इफ यू वांट टू सी अ प्रीमियम मल्टी ब्रांडेड स्टोर, आप हरिओम टावर में प्रेजेंट श्री बालाजी सेल्स जा सकते हो. दे हैव रियली स्वीट डील्स फॉर ऑल द रांची अपडेट्स फॉलोअर्स. मेक श्योर यू मेक गुड यूज ऑफ दैट. ये फ्रेश फोन है हमारे पास, काफ़ी स्लीक सी बॉक्स में है. एंड स्लीक सी बॉक्स फॉर अ रीज़न नहीं है. चार्जर इसमें नहीं है. Yep, बाद में डिसअपॉइंट मत होना. But anyways, thoughts on that later. Let's get into the box. Looking up at the box, again काफ़ी sleek सी box है. Brings in the color of the device. हमारे पास आज awesome mint color में ये phone available है. This variant is the 128 gig variant and priced at 42,000. This is a really nice phone to look at. Opening up the box. Yep. So up front we find the phone and it is a fairly big phone. 6.7 inches की screen है इसकी and it does feel really big but surprisingly very light and feels very comfortable in the hand. Let's go to the phone in a second. और क्या कुछ है इस बॉक्स के अंदर हम लोग फटाफट देख लेते हैं. Obviously regular books, regular stuff along with the SIM ejector tool, just a Type-C to Type-C cable. ये केबल तो है, चार्जर नहीं है बॉक्स में. You'll have to get one और Samsung is expecting as other manufacturers कि आपके पास खुद हो, but more on that later. Looking up at the device, प्लास्टिक रैपिंग पे है. काफ़ी लाइट वेट है ये फ़ोन डिस्पाइट बीइंग क्वाइट बिग इन हैंड्स. एंड yep, it does look gorgeous. Awesome mint color and I have to tell you ये कलर काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग लग रहा है. ओवरऑल फील ऑफ द फोन इमीडिएटली इन हैंड. पॉलीकार्बोनेट बैक है, पॉलीकार्बोनेट फ्रेम है, बट डिस्पाइट दैट द फोन डज फील very premium. In hand feel इस फोन की काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है. In the latest Samsung phones, in the recent Samsung phones, I think it has one of the best in hand feel. Back has a soft texturized finish. ये glossy back नहीं है. Rails इसके ज़रूर glossy हैं, but this is not metal. I wish it was metal. थोड़ी premium feel होती है इस फोन की, but nevertheless this phone does look premium, does feel premium. एंड एक शैडो सी इफेक्ट इसकी क्रिएट हो रही है कैमरा के साथ. कैमरा एकदम फ्लश है, एक साथ ही वेल्ड इन हो रहा है एंड इट इज एक्चुअली लुकिंग रियली सॉफ्ट एंड रियली रिफ्रेशिंग. मोर ऑन द कलर्स, एक वाइट सी कलर है, एक ब्लैक सी कलर है, एक ग्रे सी कलर है. कलर्स हम लोग मेंशन कर देंगे, बट दिस इज पर्टिकुलरली लुकिंग रियली नाइस इन हैंड. फिजिकल ओवरव्यू, बटन्स, स्पीकर, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स इस फोन पे एंड द सिम इजेक्टर टूल. लेट्स चेक दैट आउट. सिम कार्ड ट्रे ऊपर की तरफ है एंड it is a hybrid tray. Love that. You can put in a micro SD card, you can put 2 SIM card slots at once. Good stuff. Putting back in, device and in-hand feel इस फोन का definitely makes it almost close to flagship. अगर metal rail होता would have been better. And yes, glass and metal build में थोड़े phones जो बाकी आ रहे इस range में does feel better, but this one has a lightweight feel to it, has a really premium feel to it. Let's move on and turn this on. You turn on the device and here is how it looks. ये फ़ोन काफ़ी रिफ्रेशिंग लगता है. आप इसकी बैक पे देखोगे पॉलीकार्बोनेट फिनिश है, एक सैटिन स्मूथ सी फिनिश है इस पे. फिंगरप्रिंट्स इजीली नहीं आने वाले, बट द फिनिश इटसेल्फ लुक्स रियली प्रीमियम. साइड रेल्स ये ग्लॉसी मेटल फिनिश में है, मेटल नहीं है, प्लास्टिक है. फील्स डिसेंट, फील्स प्रीमियम. मेटल होता तो थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम फील आती है इस डिवाइस की, बट नेवरदलेस ओवरऑल फील गुड फैक्टर, इन हैंड फील ऑफ दिस फोन fairly premium and it does look fairly premium and very refreshing. Awesome mint color. This color is truly awesome. Front of the display, ये एक surprising है. In the recent times Samsung की mid range phones में मुझे front the display part पसंद ज़्यादा नहीं आ रहे थे. It used to have big bezels, it used to have a rounded edge to it. This one flat display, काफ़ी narrow bezels हैं. एक note वाली vibe आ रही है जो Samsung के पुराने phones में आती थी and it does look premium even up front. Camera सेटअप, क्वाड कैमरा सेटअप है. इट स्टैंड्स फ्लश. एक स्मूथ सी यूनिबॉडी फिनिश दी हुई है इस कैमरा लेंस को. इट अगेन क्रिएट्स शैडो लाइक इफेक्ट. इस कलर में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है.
डिस्प्ले की बात करें अब, Samsung's Super AMOLED, Full HD Plus resolution, 120 Hz refresh rate, HDR10, क्या करोगे इस डिस्प्ले का? Netflix Pro, Wide 1L1 सपोर्ट के साथ में आता है, all the OTT content, it's going to be brilliant, मीडिया कंजम्पशन के लिए स्क्रीन बहुत बढ़िया होने वाली है. Samsung does make one of the best displays in its mid-range and premium mid-range phones, and ये Super AMOLED screen, this phone is blessed with that Samsung goodness in device, and आपको एक बहुत ही बढ़िया, crisp, sharp, punchy, enjoyable display मिलने वाला है. I am Riya. And welcome to Ranchi Updates present Technical Shubchinta. मीडिया कंटेंट, yep, coupled with the stereo speakers जो इस फोन में आते हैं, your media consumption will be amazing, loud, crisp and actually really enjoyable stereo speaker setup है, and all the videos, all the content you're gonna enjoy in this phone, it's gonna be spot on. This display, apart from being 120 Hz, which is brilliant, इसमें वेरिएबल और डायनेमिक रिफ्रेश रेट की सेटिंग नहीं है. अगर आप 60 पे हो तो आप 60 पे हो, 120 पे हो तो 120 पे हो, बट नेवरदलेस 120 पे इट्स अ सुपर स्मूथ एंड सुपर अमेजिंग टू लुक एट Samsung Super AMOLED screen. Thumbs up for the display. Along with the brilliant display, प्रोसेसर की बात कर लें. Yep, this phone comes with a Snapdragon 738G. जी 738 ही है इस पे. थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर है, थोड़े से मिड रेंज फोन्स में अभी देखने को मिल चुका है हमें, बट nevertheless tried and tested processor, very consistent performance, daily tasks बहुत स्मूथ होने वाले हैं. इवन गेमिंग, मोस्ट ऑफ द गेम्स में काफ़ी स्मूथ गेम प्ले आपको मिल जाएगा. 60 FPS पे ऑलमोस्ट ऑल योर फेवरेट गेम्स आर गोना बी देयर अप एंड रनिंग. देख चुका है हमने ये प्रोसेसर पहले, विच इज अ लिटिल सैड एट दिस प्राइस पॉइंट, बट नेवरदलेस Exynos नहीं है. Samsung recently Snapdragon processors डाल रहा है, which is a great thumbs up. And this device, though a little underpowered processor for its price, paired up with this device, day-to-day life में, daily tasks में, and even gaming में कोई भी कमी नहीं रहने वाली है. But yeah, not the most power efficient and the latest and greatest processor for this price point. How hot does it actually get? Well, ये phone में liquid cooling है and quite a power efficient processor, polycarbonate back, बहुत ज़्यादा गर्म ये नहीं होता, कोई भी heating issues नहीं है. हाँ, GPU intensive काम, GPU intensive games थोड़ा गर्म होगा, but not that it's gonna cause a lot of trouble in day-to-day usage. हाँ, ये फोन की गर्मी से आपको प्रॉब्लम होनी हो, इस गर्मी से अगर हो रही है, यू कैन ईजिली टेक दिस फोन पूल साइड, बीच साइड, टेक वॉक इन द रेन. IP67 रेटेड है, वाटर रेजिस्टेंट है, डस्ट रेजिस्टेंट है, कोई भी स्ट्रेस पानी की नहीं लेनी. बट क्या करोगे इस फोन को पूल साइड ले जाके? फोटोज ब्रो, द अमेजिंग क्वाड कैमरा सेटअप ऑन दिस फोन अनआर्ग्यूएबली इस डिवाइस को इस प्राइस सेगमेंट पे मेक्स वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन. कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए, यू शुड डेफिनेटली लुक एट दिस वन. Why? 108 मेगापिक्सल प्राइमरी शूटर जो कि Samsung के फ्लैगशिप फोन्स में देखने को मिलती थी, with OIS, with 4K वीडियो रिकॉर्डिंग at 30 FPS enabled at the back lens, a 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड शूटर जो कि एक्चुअली यूजेबल अल्ट्रा वाइड शॉट्स लेता है, जो कि एक्चुअली अच्छे अल्ट्रा वाइड शॉट्स लेता है. 5 मेगापिक्सल मैक्रो, 5 मेगापिक्सल डेप्थ जो कि अच्छे हैं, बट फोकसिंग ऑन द प्राइमरी लेंस, इट इज अ रियली नाइस शूटर. अप फ्रंट 32 मेगापिक्सल की फ्रंट कैमरा मिलती है. थोड़ा सा फील्ड ऑफ व्यू मुझे नैरो लगी, थोड़ी सी वाइड नहीं है ये जितनी होती है यूजुअली, बट अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्स insanely good pictures even with the upfront camera and unarguably one of the best camera phones. बैटरी के फ्रंट पे 5000 mAh बैटरी है, which is really good. Doesn't come with a charger, but ये 25 watt की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है. 1 घंटे 20-30 मिनट के आसपास you can charge it from 0 to 100, which is a decent enough charging speed. बैटरी लाइफ भी जिस फोन पे मुझे देखने को मिली है, इट इज एक्चुअली गुड. हाँ, 5000 mAh के जैसा बहुत एक्सटेंडेड 2-day 3-day बैटरी नहीं मिल रही, बट 1 day is gonna be a breeze and you're gonna have a really decent and good battery life with this device. Along with really decent camera hardware, camera software भी इस फोन का बहुत बढ़िया है. Samsung ने काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करके रखे हैं अपने One UI पे, एंड इस पे आपको द बेस्ट फुल ब्लोन वर्जन ऑफ One UI मिलता है. यू गेट फीचर्स लाइक ऑब्जेक्ट इरेजर, आप इरेज कर सकते हो किसी ने फोटो बॉम्ब कर दिया तो. यू गेट फीचर्स लाइक आप वीडियो में स्विच कर सकते हो कैमराज, आपको वीडियो एंड करने की जरूरत नहीं है. यू कैन स्विच फ्रॉम द वाइड एंगल टू द रेगुलर लेंस टू द फ्रंट कैमरा. तो अगर वीडियो रिकॉर्डिंग आप करना चाहते हो, इट्स वेरी नाइस फीचर. अलॉन्ग विद दैट देयर इज अ लोडेड कैमरा सेट फीचर्स जो कि सिर्फ Samsung में आपको मिलते हैं, विच एक्चुअली कम्स इन रियली हैंडी. वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पे 4K रिकॉर्डिंग आप इसके प्राइमरी लेंस से कर सकते हो. 60 FPS पे EIS के साथ साथ OIS आ जाता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ,
really super smooth videos at full HD 60 FPS इसके बैक कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हो। फ्रंट कैमरा पे भी सैमसंग ने 4K 30 FPS वीडियो की रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया हुआ है एंड अल्ट्रा वाइड पे भी वीडियोस सरप्राइजिंगली और वेरी स्मूथ एंड वेरी यूजेबल। द मिसिंग कॉन्ट्रास्ट जो हमें चाइनीज काउंटर पार्ट्स पे देखने को मिलता है इन वीडियोस, इट्स नॉट विद दिस फोन। वील एड अप अ वीडियो सैंपल। काफी कॉन्ट्रास्टी एंड रिच वीडियो शूट करती है ये फोन विथ OIS helping with the stabilization, but only capped at 1080p 60 FPS. Despite that big battery, despite that big display, the phone feels fairly light. One hand usage is not going to be easy. It is a big screen. Corners को reach करना उतना आसान नहीं है. But this phone feels super comfortable, super snug in hand. कहीं से भी slippery vibe नहीं है, कहीं पे भी बहुत ज़्यादा बड़ा होने की vibe नहीं है, and neither is the weight uncomfortable in hands. And along with all that hardware goodness, again, it comes with Samsung's One UI. Now I don't know if you are a Samsung fan or not, but recent times में अगर आपने Samsung की One UI को use नहीं किया है, you should actually give it a try. I have been a fan. I have really liked how intuitive, how simple, how feature rich, and how good a skin it is for Android. मैं अभी currently OnePlus Nord CE2 use कर रहा हूँ. इसका नया OS is also quite smooth, quite refreshing. But Samsung just holds you with a lot of comfort in its UI and features like security, Knox, secure folder you get in the One UI. It runs on the latest Android version. एंड सैमसंग यहाँ पे आपको 4 साल की एंड्रॉइड अपडेट्स प्रॉमिस कर रहा है। 4 साल इट्स गोना रन टिल एंड्रॉइड 16 विदाउट अ हिकअप एंड 5 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स। इफ़ यू आर यूजिंग सैमसंग यू नो अपने प्रीमियम फोन्स में सिक्योरिटी अपडेट्स रेगुलरली टाइमली मिलता है एंड दैट सैमसंग इज प्रॉमिसिंग फॉर 5 years। तो अगर आप लॉन्ग टर्म किस तरीके से सोच रहे हो सॉफ्टवेयर फ्रंट पे, यू आर एक्चुअली सॉर्टेड। एंड इफ यू यूजिंग सैमसंग पे आप यहाँ यूज कर सकते हो, NFC के साथ आता है। इट इज़ अ फुल ब्लोन UI एंड इट इज़ वन ऑफ द UI दैट आई लव। सो यू आर up for a really premium software experience too on this device. So all in all, what's my take on this device? Well, design quite premium, feels quite amazing in hand. कंफर्टेबल है ये डिज़ाइन। अगर बड़ी स्क्रीन पसंद है आपको, एक बहुत ही बढ़िया 6.7 इंचेस की स्क्रीन आपको मिल रही है इस डिवाइस के साथ। कैमरा अगर आपकी प्रायोरिटी है, इट कम्स इक्विप्ड विथ रियली ब्रिलियंट कैमराज with OIS along with really cool software features जो कि Samsung provide कर रहा है, which makes the overall camera experience really brilliant at this price point. Security and protection, IP67 rating, Corning Gorilla Glass 5, Samsung की Knox protection, secure folder, security point of view से जो कि Android में लोग ज़्यादा consider कर रहे हैं, it is one brilliant package. And processing is not that bad. Snapdragon 768, good processor, but हाँ, bang for the buck, the latest and greatest at that price point, वो इस फ़ोन की थोड़ी सी एक लैकिंग बन जाती है। बट इफ़ यू आर नॉट अ वेरी पावर हंग्री, वेरी इंटेंसिव यूजर, यू गोना हैव अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस विद दिस फोन एंड इट इज़ हार्ड नॉट टू रिकमेंड दिस फोन एट दिस प्राइस पॉइंट। ऑफर्स लगा लोगे तो प्राइस पॉइंट थोड़ी और कम हो जाती है एंड एट दिस प्राइस पॉइंट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑफरिंग बाय सैमसंग एंड इन द मिड रेंज सेगमेंट। अपग्रेड करना चाहते हो अगर आप एक प्रीमियम सेगमेंट के फ़ोन पे, यू कैन ईजिली डू दैट with this phone. A huge shout out to Balaji Sales जिन्होंने हमें ये फ़ोन प्रोवाइड किया है इस वीडियो के लिए। अगर आपको भी एक स्मार्टफोन खरीदना है, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने हैं, इफ यू वांट टू सी अ प्रीमियम मल्टी ब्रांडेड स्टोर, आप हरिओम टावर में प्रेजेंट श्री बालाजी सेल्स जा सकते हो। दे हैव रियली स्वीट डील्स फॉर ऑल द रांची अपडेट्स फॉलोअर्स। मेक श्योर यू मेक गुड यूज ऑफ दैट एंड से अ हाई टू देम। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आई होप ये वीडियो आपकी थोड़ी भी काम आई हो। इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, please show some likes, please show some shares, leave it down in the comments. कोई queries, कोई questions, you want comparisons, in-depth review, camera samples, सब कुछ करने वाले हम आपके लिए। हमें comments पे डालिए एंड नेक्स्ट कौन सा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चाहिए, नेक्स्ट क्या देखना है आपको स्क्रीन पे, show us in the comments and we're gonna be back soon. Thank you so much for tuning in.